Dear students of class 8, today we are going to start your first chapter of science. The heading is crop production and management. That is the heading of science first chapter. The heading is agriculture. The practice of growing plants and rearing animals for food, clothing and other products is referred to as agriculture. So that is the answer of first one question. What is agriculture? What do you mean by agriculture? ऐसे भी बोल सकता है. Agriculture means क्या होता है? The practice of growing plants and rearing animals. Other type of animals just like cows, buffaloes, like that, sheep, for food, clothing and other products is referred to as agriculture. Agriculture includes crop production and several other related activities like animal husbandry, poultry, फिशिंग एंड सेरीकल्चर. ये सब इसमें आ जाता है. किसमें आता है? क्रॉप प्रोडक्शन में आता है. क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेवरल अदर रिलेटेड इसमें टोटल एग्रीकल्चर में आता है. ये एग्रीकल्चर इंक्लूड्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड सेवरल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंडरी, पोल्ट्री, फिशिंग एंड सेरीकल्चर. ह्यूमन स्टार्टेड एग्रीकल्चर अराउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. इंसान खेती-बाड़ी हज़ारों साल पहले शुरू किया था. बिफोर विच, उससे पहले दे वेर वांडरेड्स. वो एक जगह से दूसरे जगह घूमता था. फॉर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दे वेर वांडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. दे वेर वांडरेड्स टू गैदर रॉ फूड, मीन्स कच्चा फूड. दैट मीन्स एट दैट टाइम दे यूज द फूड as it is, whatever they are getting from the nature. Since the human population is ever growing and plants are the major source of food, it is necessary to increase the production of crops to meet the food requirements of the growing population. You know that every day the world population is increasing. So that क्या होगा? We have to meet the needs of the population. So that we have to increase the production of the crops in order to satisfy the hunger of the growing population. Crops. Ready? When plants of the same type, TYP type, are grown and cultivated at the same place on a large scale, it is known as crop. What do you mean by crop? Answer it. What do you mean by crop? When plants of the same type, this is rice to rice, wheat to wheat, maize to maize, are grown and cultivated at the same place on a large scale, एकदम बहुत हजारों एकड़ एक साथ कल्टिवेट होता है, it is known as crop. For example, a large number of rice plants grown in a field are referred to as a crop of paddy. The large number of plants and trees that we see around cannot be called crops. हमारे आजू बाजू में अलग अलग पौधा वगैरह देखता है, उसको क्रॉप बोल नहीं सकता है. क्योंकि बिकॉज ऑल दीज प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि वो अलग अलग तरीके का है. द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन. जो पैदा करता है उसको क्रॉप प्रोडक्शन बोलता है. द मेन क्रॉप्स ऑफ ग्राउंड इन इंडिया आर सरील, दैट मीन्स ग्रेन क्रॉप्स. ग्रेन क्रॉप्स मीन्स हमारा राइस आता है और व्हीट आता है, दैट इज दे आर द स्टेपल फूड. फाइबर क्रॉप्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. सरील्स फॉर्म द स्टेपल फूड और स्टेपल फूड. इंसान का स्टेपल फूड इंडिया में टू होता है मेनली. साउथ इंडियंस का राइस होता है और नॉर्थ इंडियन का जो व्हीट होता है. Staple food, that is the major part of the diet for the people. Rice and wheat and maize are the most commonly grown cereal crops. इंडिया में सबसे ज़्यादा cereal crops फेमस है राइस, maize and wheat. Some crop plants grown in India. इंडिया में जितना crop plants grown कर रहा है उसका एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम दे रहा है. हेडिंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एग्जाम्पल्स लिखना है आपको. ऐसे कॉलम बनाना है नोटबुक में. नंबर 1, ग्रेन क्रॉप्स. ग्रेन क्रॉप्स में मेनली क्या क्या आता है? राइस, व्हीट, मेज, BARLEY बार्ली, RAGI रागी. ये ग्रेन क्रॉप्स का मेन है. नंबर 2, पल्सेस. पल्सेस को हम दाल भी बोलता है, DALS दाल्स. इसमें आता है ग्राम, PAS पीस, BANS बीन्स. नंबर 3 आता है ऑयल सीड. ऑयल सीड मीन्स हमको ऑयल जिसमें मिलता है. मस्टर्ड, सरसों. ग्राउंडनट, ग्राउंडनट माने आप लोगों को मालूम है मूंगफली. सनफ्लावर, सोयाबीन, इसमें से हमें ऑयल्स मिलता है.
नंबर 4 इज शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप्स क्या क्या है? शुगर केन, बीट रूट। एंड नंबर 5 इज फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप्स में मेन आता है जूट आता है और कॉटन। नंबर 6 प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में क्या क्या आता है? बिवरेजेस आता है ज़्यादातर। हम लोग चाय पीता है, टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट, दीज आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। नंबर 7 इज रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स में मेन है स्वीट पोटैटो एंड कैरेट। नंबर 8 tuber crops is a main, the only one that is a potato. Potato is the main tuber crop. Number 1 points to remember. You have to remember these points. Cereals like rice, wheat, etc. provide us mainly carbohydrates. ये जो हम जो खाता है स्टेपल फूड हमारा राइस है, वीट है, और ये सब हमें क्या देता है? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स देता है। नंबर 2 पल्सेस। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स। पल्सेस में मेन में ग्राम है, पीस है, बीन्स है, ये बहुत अधिक मात्रा में इसमें प्रोटीन मिलता है। नंबर 3 कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर एक्सेट्रा प्रोवाइड ऑयल और फैट्स। ये ऑयल हमें क्या देता है? ये ऑयल देता है कौन कौन? कोकोनट देता है, मस्टर्ड देता है, सनफ्लावर, या ये फैट भी देता है। हार्टिकल्चर, लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर माने क्या होता है? बहुत सारी मात्रा में लार्ज स्केल कल्टीवेशन होता है इसका, सब्जियों का, फल का और फ्लावरिंग प्लांट्स का, इसको हॉर्टिकल्चर बोलता है। एंड दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोलता है। कौन सी? हॉर्टिकल्चर क्रॉप मीन्स कौन सी क्रॉप्स आता है? लार्ज स्केल कल्टीवेशन, वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट हॉर्टिकल्चर है, और फ्लावरिंग प्लांट्स हॉर्टिकल्चर है। Today's homework for you, read the given summary thoroughly 2 times. दिया हुआ समरी आपको कॉपियों में लिखना है पूरा डिटेल में जितना दे दिया, और ये डायग्राम भी आपको बनाना है। इसके बाद इसको 2 बार कम से कम thoroughly पढ़ना है।